जब भी हम let's understand this diagram. If I have to make a house, okay, the first thing I make in a house is the foundation. Okay, फाउंडेशन बन जाती है, नींव रख देते हैं हम घर की, फिर हम घर बनाना स्टार्ट करते हैं. We make the pillars, we make the windows, we make the doors, we make the walls. Okay, and then we make the roof. Now, once the house is completely made, can we see the foundation? No, we cannot. But we can see the walls, windows, roof, and the roof as well. Okay, but we cannot see the foundation. This hidden foundation is the landmark that holds your entire building. Okay, ये आपका फाउंडेशन बहुत जरूरी है पूरी बिल्डिंग को इंटैक्ट रखने के लिए. अगर आपने इस फाउंडेशन को हिला दिया तो पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी आपकी. ये था हमारा अजम्पशन. ठीक है, अब इसी अजम्पशन पे हमने प्रेमिस और कंक्लूजन देखा. प्रेमिस क्या है? जो क्वेश्चन में दिया गया है मुझे, वो मुझे क्लियरली दिख रहा है. ओके, आई कैन सी दैट क्लियरली. प्रेमिस क्या होता है? एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन में लिखा है. फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन में लिखा है that Alpha ma'am teaches critical reasoning, you will assume it to be true. If the examiner says Alpha ma'am teaches maths, you will think, okay, if the examiner says that in the question, I'll assume it to be true. So premise is what the examiner says in the question. And looking at the premise, what is that? Listen to me very carefully because our entire session is on conclusions. Looking at the premise, what is that you can be certain about is your conclusion. Okay. For example, if my question says, Alpha ma'am teaches maths, can you be certain about the fact that she cannot teach English? Everyone, try to answer this. My question says Alpha ma'am teaches maths. That's the only thing I know from the question. You cannot say anything about English or anything else. Another example. What we draw as a conclusion, remember, it has to be certain. उसका सही होना बिल्कुल जरूरी है. हमने ये ड्रॉ आउट किया कि जो कंक्लूजन होगा ना, वो आपका क्वेश्चन में आपको नजर आ सकता है. इट कैन बी विजिबल टू यू इन द क्वेश्चन. ओके, सो इट कैन बी विजिबल. 2, it can be a rephrasement of the question. For example, if the question said democracy, इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये है कि वहां हर एक पर्सन को वोटिंग राइट मिल रहा है. इट्स अ रीफ्रेजमेंट ऑफ द वर्ड डेमोक्रेसी. सो माय क्वेश्चन कैन बी अ रीफ्रेजमेंट. ऑल तो देखिए, स्ट्रिक्ट क्रिटिकल रीजनिंग टर्म्स में रीफ्रेजमेंट इज नॉट अ करेक्ट कंक्लूजन. लेकिन हम कभी कभी लिबर्टी देते हैं एग्जामिनर को डिपेंडिंग अपॉन द ऑप्शंस. तो हम इसको एक ऐसा ऑप्शन की तरह पेंडिंग मानते हैं जहां रीफ्रेजमेंट कभी कभी परमिसिबल हो सकता है. ठीक है. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, विच इज द थर्ड पॉइंट, जो आपको आंसर निकालने में हमेशा हेल्प करेगा. द थर्ड पॉइंट इज दैट अ कंक्लूजन दैट यू ड्रॉ नीड्स टू बी वैलिड इन एवरी सिंगल सिनेरियो. वो जरूर 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 ट्रू होना चाहिए हर पॉसिबिलिटी में. सो व्हेन आई से इंडिया अगर डेमोक्रेटिक है, तो इसका मतलब हर पॉसिबिलिटी में हर एक वोट की एक वैल्यू होनी चाहिए. इन एवरी पॉसिबिलिटी दैट कंक्लूजन नीड्स टू बी करेक्ट. दैट्स व्हाट अ कंक्लूजन इज. और मेक श्योर यू डू नॉट लीव द सेशन विदाउट लाइकिंग इट. लाइक करो तो जाना, सब्सक्राइब करो तो जाना, कमेंट करो अंडर माय वीडियो इफ यू लाइक द सेशन. फॉलो मी ऑन follow us on Instagram, Facebook, Telegram, and download app on Google Play. I hope you had a fun learning session today, everyone. Have a very, very good day. God bless you.